Have we done? Have we done this? Phalam asti? No. We have done, Guruji. Yes, sir. We have done. Yes, done, sir. So, up till Saptakakara. Even now, that is सप्तकारा में आ गए. ये दिस ऑल ओवर किया. सप्तककर में हम लोग कति तक आ गए. कति. मैं दोबारा ले लेता हूँ. चलो जी. सप्तककारा, these are the words. ये जो शब्द हैं वो शब्द ही अपने आप में प्रश्न का रूप दिखाते हैं. वो शब्द अगर कोई वाक्य में आ गया तो वो वाक्य सवाल बन जाता है, प्रश्न बन जाता है. तो similarly any of these 7 words, this is saptakakara. Saptakakara means 7 questions, form of questions which start with kakara. So it has been said that way, saptakakara. In future you will be learning much more new words which is symbolizing for past tense what, for present tense what, for future tense what. There is a single words that will be taught later on, not at the initial stage. Let us be practical. Okay. Which are these 7 words? Let me explain to you again. Kim. Where? Kim. Kim means what? Kim means what? WHAT, what? हिंदी में कहे तो क्या. भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, क्या इज द प्रश्न. तो किम जैसे ही जो भी वाक्य के अंदर आप किम देखो, एक्सेप्ट किम जोन्स, डोंट मिक्स अप किम जोन्स. सो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था. आई हैड टू टेक इंटरव्यू. आई आस्क्ड हिम भवतः नाम किम. ही सेड मम नाम किम. अरे मैं दोबारा पूछ रहा हूँ भवतः नाम किम. वो दोबारा बोल रहा है मम नाम किम, परंतु वो किम अलग था, ये किम अलग है. ठीक है. तो किम मीन्स व्हाट. कुत्र, वेयर. कुत्र, वेयर. कति, हाउ मेनी. कति, हाउ मेनी. कदा इज व्हेन. अभी व्हेन यानी आएगा दिन आएगा या पीरियड आएगा या डेट आएगा या काल. काल मीन्स पूरे दिन में मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, दैट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कदा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे भवान मिलामः. कदा मैं पूछूंगा, मिलामः यानी मिलते हैं. कदा? अद्य रात्रो अष्टवादने. अद्य रात्रो अष्टवादने. तो रात्रो भी बोले यानी काल हुआ, अष्टवादने यानी टाइम भी दिया उन्होंने. तो ये बनेगा कदा में. कति में भी टाइम आता है. कति में भी टाइम आता है. जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि कति जनाः सन्ति, कि एतत् शिविरे कति जनाः सन्ति, यानी ये वर्कशॉप में कति जनाः सन्ति. प्रायशः 30 जनाः सन्ति, यानी 30 पीपल. प्रायशः, मोस्ट प्रोबेबली, अप एंड डाउन, प्लस एंड माइनस. कति जनाः सन्ति ये भी हो सकता है. और ये भी पूछ सकते हैं आप कि कति वादने मिलामः. कति वादने मिलामः. अष्टवादने मिलामः. सप्तवादने मिलामः. तो ये जो सप्त, अष्ट, these are countable ना. 1 2 3 4 you can count them. It has a unit. Accordingly, kati is considered that way. Kada, as I said, when. Kutah. Kutah means from where. Kutah means from where. So कुतः आगतवान या कुतः आनीतवान. अगर आप कोई शर्ट अच्छा लाए हैं तो कहेंगे अरे महोदय एतत् युतकम, एतत् युतकम कुतः आनीतवान. कहां से लेकर आए? अरे एतत् दिल्लीतः आगत आनीतवान. दिल्लीतः आनीतवान. तह वहां पे भी रिप्लाई में कहां से लेकर आते हैं. तो हाउ डू यू रिप्लाई? इफ आई एम आस्किंग यू, एनीबडी प्लीज पार्टिसिपेट. अगर इफ आई एम आस्किंग आप कहां से आए, व्हाट विल बी योर आंसर इन हिंदी?
एम आई ऑडिबल और क्या हुआ? यस सर, मैं बेंगलोर मुंबई से से आया। आए सर। हाँ, आप इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैं गब्बर सिंह नहीं हूँ, मैं एके हंगल हूँ। हाँ, इतना सन्नाटा मम क्यों है भाई? मुंबई ने आयति आयती नहीं। आगच्छति आगच्छति। कोमदी, हाँ। आर यू रियली अ महाराष्ट्रियन? नो, नहीं। इनके हर सेंटेंस में शी एड्स महाराष्ट्रियन वर्ड्स, यू नो. A couple of them she has sent me and I also must have. 180 વર્ષથી મહારાષ્ટ્રીયન જોડે રહીએ. 180 વર્ષથી મહારાષ્ટ્રીયન જોડે રહેતા હોય જ્યારે Definitely. બોમ્બે ને હતું ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર, તો it just Yes. comes. Absolutely, very common it is. આગચ્છતિ બરાબર છે. No. Okay, I'm no. Yeah, you can say agachami. अग्रे मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ, कहाँ से आए? एनीबडी कोई हिंदी में जवाब दे. घर से आए। घर से आया हूँ. हाँ, मुंबई से, घर से आए. यू से ना, से लगाते हैं ना, वही. कुतः, कहाँ से. तह का स्वरूप बन जाता है से. तो उत्तर जब भी देंगे तो से लगाना पड़ेगा. जैसे कि ऑफिस से आया, कार्यालय तह आगतवान, आया. कार्यालय तह, तह लगाना पड़ेगा मुझे. कुतः, कार्यालय तह. कुतः का मतलब होता है कहां से, तो कार्यालय से, तो तह मुझे जोड़ना जरूरी है. वी विल सी इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस अगेन. किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम मीन्स हाउ. कथम मीन्स हाउ. किमर्थम, वाई. किमर्थम, वाई. एक सेंटेंस दोबारा. सारंगः किम करोति. सह पुस्तक संस्कृतम पठति. सारंगः पुस्तकम पठति. या मैं सारंग के बगल में हूं तो मैं जवाब दूंगा एषः पुस्तकम पठति. एषः पुस्तकम पठति, मेरे बगल में है. सारंगः किम करोति. नाउ कुत्र. कुत्र इज वेयर. वेयर. अम्बा कुत्र अस्ति. अम्बा मंदिरे अस्ति. अम्बा ग्रामे अस्ति. गांव गई है तो क्या कहेंगे, ग्रामे अस्ति. अम्बा गृहे अस्ति. या फिर कहेंगे अम्बा कुत्र अस्ति इति अहम न जानामि. आई डोंट नो, अहम न जानामि. ओके, तो अम्बा कुत्र अस्ति. अग्रे. कति, हाउ मेनी. एम आई गोइंग फास्ट और इज इट ओके? आप लोग ब्रेक भी नहीं लगा रहे हो यार. ऐसे डर के मत रहो, फिर मैं वापस अपने आई एम ट्राइंग टू पिक अप माय स्पिरिट एंड આ રિવિઝન છે એટલે ચાલશે. हाँ, पण रिवीजन છે, आई एग्री, बट आर यू रिवीजन में भी काफी लोगों का रह गया है. they have not understood the module or anything of that sort, this particular topic. They can put up their questions. Okay, question related to the subject, yes, I am ready to. I will never, I have the patience to convince you all. બસ આપણે કુત્ર સુધી કરેલું હતું, આની પછી નથી કર્યું. અંબા કુત્ર अस्ति. અંબા ગૃહે अस्ति. आपणे अस्ति. आपणः, आपणः is a pulling शब्द for shop, shop, shop. आपणः. विपणीम, विपणीम यानी मार्केट, मॉल. मॉल को भी विपणीम कहा जाता है, मार्केट को भी विपणीम कहेंगे. ठीक है. सो वस्त्र विपणीम यानी क्लॉथ मार्केट. लोह विपणीम यानी आयन मार्केट. लोहार चाल जिसे कहते हैं. इट इज अ फेमस प्लेस. Previously it used to happen, now it is a electric bazaar. Nowadays you will find all electric and pharmaceutical. Agre. Kati. Kati is how many. So कति के लिए जनरली मेरे ख्याल से कति भी हो गया था, शोले का डायलॉग में बोल चुका हूं आप लोगों को कि कति जनाहा संति. कति नहीं हुआ था. हाँ, तो कति, कति इज हाउ मेनी.
तो वो शोले में बोलते हैं ना, कति, गब्बर सिंह नहीं बोलता, कति जनाहा संति जनद्वयम त्वाम त्रीणी तरी रिक्त हस्ते प्रत्यागतवान, फिर भी खाली हाथ वापस आए। हाँ? किम चिंतितवान स्वामी आनंद भवति वा एतस्य दंड आवश्यकम निश्चयेन आवश्यकम। कति गोलिकामस्ति एतत् कति, हाँ, एतत् बंदूके कति गोलिकामस्ति, षट गोलिकामस्ति, क्योंकि कति हुआ तो काउंटेबल, षट गोलिकामस्ति स्वामी। अन्याय धम धम धम, तीन। इदानीं समीचीनम जनत्वयम जन त्रय गोलिकामपि त्रय पश्यामः किमपि कथम किम लभ्यते, किसको क्या मिलता है। स्वामी अहम त्वाम लवणम खादितवान इदानीं गोलिकाम खादतु, लवणम यानी नमक खाया है, इदानीं गोलिकाम खादतु। कति, ओके। So Monica को Sorry बहुत sir, interrupting in between. Lovely dialogue. I was just imagining Gabbar Singh in this language. Sorry to interrupt. I don't think so. He must have done that thing. No, no, I was just not, imagining. हाँ, आपने बहुत बढ़िया बोला, लेकिन इतना अच्छा बोला है आपने, I will सुनने को pass बहुत on. आनंद आ गया। I will pass on this thing also. There is एक छोटा बच्चा अपना स्टूडेंट है, उन्होंने भी काफी अच्छे अच्छे डायलॉग्स शोले, because they everybody knew that there are 4 movies which are next to my heart. First thing is Sholay, second definitely is Guide, third is Mera Naam Joker, and fourth is Zindagi Na Mile Dobara. I always think that all 4 of them are wonderful philosophy movies. So we will talk about it as the point comes. So here Kati. So for you, Kati is now in your mind. Kati countable. यहाँ पे केवल मैं हिंट दे रहा हूं. I am just giving you all the hint. But there will be a separate chart topic on that. And that is, if it is uncountable, it is kiyat. Kati, kati golikam asti. ठीक है. Kati, countable. Kiyat jalam asti sagare. Sagare, कियत जलम अस्ति. वहां पे ये नहीं कह सकते कति जलम अस्ति, नहीं तो अदानी बालकेश्वर पे बैठ जाएगी, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ऐसे करके समुद्र खाली कर देगी. इज इट पॉसिबल टू एम्प्टी अ समुद्र? इट इज नॉट पॉसिबल. तो क्या कहेंगे? कियत. तो क्या होगा? बहु जलम अस्ति. कियत इज अनकाउंटेबल. सो व्हाट विल बी द आंसर? बहु जलम अस्ति. या ना जलम पर्याप्तम नास्ति. कियत. अभी आप घर पे खाना खाने के लिए बैठे, या आप वो फेस्टिवल वगैरह रहता है या शादी ब्याह रहता है, तभी गांव में होता था कि पूरे समाज को बुलाकर उन लोग इकट्ठा खाना खाते हैं वगैरह. तो दिस इज अ कॉमन इंक्वायरी. यू गो टू द किचन इन यू आस्क कि कितनी दाल बची है या कितनी दाल है. तो सामने से जवाब आता है, अरे लोगों के लिए है, इनफ है, आप चिंता मत करो. तो क्या होगा? कियत सूपम अस्ति. दाल को सूपम कहा जाता है. इन संस्कृतम द सूप दैट वी हैव इट, टोमेटो सूप, दिस कॉर्न सूप और मंचाओ सूप, चाइनीज सूप और यूरोपियन सूप. दिस वर्ड सूप is originally a Sanskrit word for dal or rasam. Even we eat rasam with rice and all that, liquid form. It is supam. In Sanskrit also, Sanskrit it is said supam. अन्य लैंग्वेज ने जस्ट कॉपी किया है वर्ड को. सो हम जाके क्या पूछेंगे? कियत सूपम अस्ति. तो वो बोलेंगे पर्याप्तम अस्ति, चिंता मा करो तू. ठीक है, इट इज इनफ, डोंट वरी, चिंता मा करो तू.
This is where it is Kiyat, but we will take that. It is one individual topic that I take for Kiyat. Now, let us form a sentence in this. Kati phalam avashyakam. Ekam paryaptam. But here, what is the question? Kati. Kati. इसका detail का information you will get it from Abhyas Varga. We will be having sentence formations and all that. It is a workbook system. So every subject you will be definitely going in much more details. Now, is this point clear? Kati? Is this point clear? Clear. Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mahila Mandal? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर मत कीजिएगा. सर के सर पे बाद में ये आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा. मत कीजिएगा सर नहीं. आई एम जस्ट अर्जुन फॉर एवरीबडी. आई एम वन ऑफ यू ऑल. Sir, I am but very small than you. I have to call you sir. देखिए, यही अर्जुन तो कृष्ण से छोटे भी थे और क्षमता में भी कम थे. उनकी ताकत भी कम थी कृष्ण से, परंतु एक दूसरे को नाम से पुकारना, दैट इज, थैंक यू वेरी मच अदानी, एक दूसरे को नाम से पुकारना is the culture of Sanskritam. You have respect for anybody now. You should have it in your heart. You cannot, the respect that is portrayed on face or on words, I don't think so that value much. Really, that doesn't value much. The respect in heart is more important. हाँ ओम जी. Guruji, here in America they call it first name. First name, absolutely. हाँ, यहाँ पे तो why there is a first name system? Let there be a bonding यार. वो ऊंचा नीचा क्या है? Jimmy is saying I am much smaller than you, younger than you. Who told you my age? We are all very smaller in front of you, Guruji. नहीं, Jimmy, who told you my age? No, sir, no one told me. Then I was just born a decade ago. That's it. Nothing in age. Please keep it up. It is my humble request. Sir बोलते हैं, मैं सुन भी लेता हूँ, but somewhere I feel के am I pampering my ego? ऐसे लगता है. I have that guilt factor. I feel के am I pampering my ego? So to help me out, to come, let me out of that, question mark. Let it be Arjun. It is more comfortable. Yeah. Going now towards this. This is Kati. Now Kada. Kada is, I would say, when. So the Balakaha Kada Kridati. Balakaha. Sorry. Again, I did a mistake. Exactly below the screen sharing is the button of PowerPoint on my monitor. So as a result, I land up. Kada. Balakaha kada kridati. Balakaha sayan kale kridati. Kal. Okay. सायन काले सप्तवादने क्रीडति. सप्तवादनम. मुझे पूछेंगे बालकः कदा क्रीडति? बालकः सर्वदा क्रीडति. They should always play, यार, isn't it? बालकः कदा क्रीडति. अगर आप अब बोलेंगे अर्जुनः श्वः मिलामः. श्वः means tomorrow. श्वः मिलामः. अस्तु. कदा कति वादने कदा मिलामः? सायंकाले मिलामः. कति वादने? अष्टवादने. अस्तु. ओके. वो आपको वो गाना याद है? टुक टुक लीना चंद्रावरकर एंड जितेंद्र.
ढल गया दिन हो गई रात। जाने दो जाना है। कहीं जाना है। हाँ, फिर कब मिलोगे, इट इज इन दैट सॉन्ग ओनली ना, फिर कब मिलोगे। नहीं यस यस, हाँ, फिर कब मिलोगे। वो राजेश खन्ना वाला है। वो राजेश खन्ना का है। आशा भरे का राजेश खन्ना। हाँ, दैट्स डिफरेंट। इंदिरा मासी यूनिक, જબરદસ્ત इंदिरा मासी। થેન્ક યુ સર। તમે રાજેશ ખન્નાના ફેન હતા? ના, ફેન તો નહીં। એ અમારા ઠાકુરદ્વારમાં જ રહેતા હતા, એટલે નાનપણ એને એની સ્કૂલ ને મારી स्कूल પણ सेम, उनकी और जितेंद्र की भी स्कूल सेम। जंपिंग जैक वो एक कार्टून। फिर हमारे गिरगांव में ये भी थे, प्रेम चोपड़ा। सर मेरे मामा की बिल्डिंग के सामने जितेंद्र था। अच्छा, खन्ना भवन ની સામે જ હા, ખન્ના ભવન સામે। હા 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 હા, આપણે બધાના મૂળ છેલ્લે આવશે ઠાकुरद्वाરમાં, सी वार्ड में आके मिलेंगे सब। हाँ ठीक है, परंतु हाँ, तो मेरा तो वो है, डल गया दिन हो गई शाम नहीं, इट इज अबाउट फिर कब मिलोगे। हाँ, पुनर्कदा मिलाम यदा यदा त्वम इच्छसि। आधी रात को अर्धरात रहो, आम अर्धरात रहो, तो कदा कदा मिलामः। ओके, द पॉइंट इज कदा मिलामः, कब मिलेंगे। बट see, this was what in a song I gave you of spoken language, but it is not always used in spoken language, this spoken words, they are more alankaric words, okay, more decorative words. So kada, is the point clear with kada with everybody? Yes, or any problems? Yes, no problem sir. Yes. ના, ઇન્દિરા માસી તમારા સિવાય બી બીજા બી તો છે નવા આવેલા। હા, સોરી સર। ના કઈ વાંધો નહીં, નવા લોકોને પૂછવું હોય તો પૂછી શકે ને। All new people, please, is the point clear? Sudha, is the point clear? Everybody? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes. Sir, in that song you sang kahoge, what is the Sanskrit word? Vadatu. Vadatu. Actually, Vadatu and all these things won't come in song. Okay, okay. They have a poetic language that we will learn later. I do not want to introduce that word at this moment because we are hard. Because it is hard to memorize the present words. So how can we easily remember those poetic words? So let it be at this moment of time. Kutaha, as I said, kutaha is kutaha agatvan. It is karyalaytaha. Now you saw here kutaha, karyalaytaha. Karyalayah is a masculine word, whether it is masculine or feminine. Mathurataha, mathura आकारांत स्त्रीलिंग, काशी इकारांत स्त्रीलिंग, तो क्या होगा? कुतः आगतवान, काशीतः आगतवान। ओके, तह, तो ये होगा तह। या आप सुधा को पूछेंगे अपने ग्रुप में जो सुधा जी है उनको कि एतत् साटिका कुतः आनीतवती, वो बोलेगी नल्ली स्टोर तह आनीतवती, नल्ली स्टोर से लेके आए। है कि नहीं है सब लोग? Here. Yes sir. Yes sir. Yes sir. सर, अगर मुझे पूछना है आप कहाँ रहते हो, तो कैसे त्वम कुतः नगरे? कुतः नहीं, कुतः कैसे? कुतः यानी you are from where you have come, from where you have gone. From which place are you coming? हाँ, तो त्वम कुतः नगरे? नहीं, कुत्र वसति, where. अच्छा, प्लेस के लिए where आएगा ना। See, if I am asking you, somebody has kept my specs somewhere. Somewhere means at some place. Okay. So what will be my question? Mama upanetram kutra asti. okay. Kutra. Where is it? So what do you want to say exactly, Sudha?
from which place are you coming? Or so from which place are you coming? Then it is a combination of two different things now. Kutra bhavan kutah agatvan कुत्र वसति, कुत्र वसति, वसति यानी रहता है, रहते हैं, हाँ? तो कुत्र वसति कुतः आगतवान, अरे मुंबई नगरे वसामि मुंबईतः आगतवान. You get my point? Yeah, yes, sir. Got the difference. Yes. So those were the combination of two different things. Agre. Katham. Katham means how. So common question is, swastham katham asti bhavan, या भगिनी स्वास्थ्यम कथम अस्ति, भवती स्वास्थ्यम कथम अस्ति, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, तो स्वास्थ्यम कथम अस्ति, कथम. रसगोलकम कथम अस्ति, मधुरम अस्ति. वापिस जिमी का स्माइल चालू हो गया. हाँ, तो और क्या, अब हम कथम के लिए कोई वाक्य और देंगे, बताइए. शिबिरम कथम प्रचलति, हाउ इज शिविर रनिंग. कथम प्रचलति यानी कथम चलति, प्रचलति, चलति, कथम. एतत् पुष्पम कथम अस्ति, या शाटिका कथम अस्ति, वर्णः कथम अस्ति, शाटिका याः वर्णः कथम अस्ति, यानी शाटिका का कलर कैसा है. हाँ, समीचीनम नास्ति, इट्स नॉट ओके. कथम अस्ति. सर लास्ट वाला आपने क्या बोला, शाटिका, सॉरी. हाँ, शाटिका याः वर्णः कथम अस्ति. इट इज अ ग्रामर पार्ट, वी विल लर्न लेटर. ओके सर. लेकिन मेरे मुंह से ऐसा ही निकल गया, शाटिका वर्ण कथम अस्ति ऐसा बोलना चाहिए था, बट कांट हेल्प इट, इट कम्स ऑटोमेटिकली. सो सर, हाँ, आपने एक्चुअली अंधेरे में तीर छोड़ा. रसगुल्ला में माय फेवरेट. अंधेरे में नहीं छोड़ा था. इवन yesterday you smiled and I told you. See, it was not you. Sorry, it was not you. It was not you. In earlier batch, we have one participant. Monica, what is that thumbs up for? You drink thumbs up with rasgolakam? I'm surprised. I can't do that. If I eat rasgolakam, I cannot eat thumbs up. Huh, Monica? Okay, she has decided not to answer. Why should I answer to? So she's eating rasgulla. She can't speak. That is how you caught her. That is how you caught her. Yes, her mouth is full of rasgullas. Abhi for Jimmy's mouth has started watering. I can't help because definitely it's my favorite too. So, swastham katham asti. Hare, swastham uttamam asti. Chinta mastu. Swastham uttamam asti. Chinta mastu. Agre. Kimartham. Kimartham, why? Kimartham, why? Here there we have to show a purpose. For example, vayam atre, atre. Kimartham milamaha. Kimartham milamaha. हम यहाँ किस लिए मिले हैं? Why we have all met here? Why? Vayam संस्कृतम पठनार्थम मिलामः. संस्कृतम पठनार्थम. किमर्थम पठनार्थम. किमर्थम पठनार्थम. किमर्थम भोजनार्थम. वयम अत्रे किमर्थम मिलामः. वयम अत्रे भोजनार्थम मिलामः. हम यहाँ क्यों मिले? खाना खाने के लिए मिले हैं. भोजनार्थम. संस्कृतम पठनार्थम. मुझे मालूम है काफी लोगों के दिमाग में चलता है कि सर कोई सर खाता है तो उसके लिए क्या कहते हैं? किम अर्थम एतत् करोति.
शीरो खादनार्थम, शीरो खादनार्थम, तो लोग क्या समझेंगे? सीरा खाने के लिए. सो प्लीज अवॉइड दैट वर्ड. तो वयम संस्कृत पठनार्थम मिलामः. Am I right? Am I going? Yes, sir. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes. 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 No, somebody Yes. had somebody said no. Okay. हाँ. Sir, Kim? हाँ बोलिए. sir, yesterday you had asked to give the example for kutra. So I had given Bharvi kutra agachati. You said it's wrong. Then you said you will be explaining. I mean, I wanted to know that. हाँ, भारती कुत्र अगच्छत. कुत्र agachati. हाँ. अगच्छति क्यों? हाँ, coming नहीं. हाँ. Right. आगच्छति. आगच्छति. Sorry. Agachati. हाँ. So you realize ना, कुत्र आगच्छति. It cannot be कुत्र आगच्छति. कुतः आगच्छति. कुतः आगच्छति. Isn't it? Absolutely. Thank you very much. Thank you very much. It was an important sentence. Once more, the sentence she had asked was Bharti kutra agachati. Am I right? Am I Yes, right? sir. हाँ. Yes, sir. Bharti kutra agachati. It is not kutra agachati. Bharti kutra gachati. So everywhere, all the words are not appropriate. Like you cannot ask somebody, Bhavan kimartham gruhe upavishati. क्यों घर में बैठा है? भगवान किमर्थम गृहे एव स्थितवान, यानी घर में ही बैठे हो. किमर्थम? लॉकडाउन अस्तु. अस्ति भवति. लॉकडाउन अस्ति भी नहीं होगा, बिकॉज लॉकडाउन इज अ पीरियड. तो लॉकडाउन भवति. ते कारणेन अहम गृहे एव स्थित्वा. सर, हाँ. लॉकडाउन का संस्कृत वर्ड? ट्रांसलेशन मुझे नहीं आता. लॉकडाउन क्या कहेंगे? तालकालः. 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 ओके, तालकालः. Namo Namo, sir. Namo Sir, Namo. can you please repeat that thing? Bharti kutra gachati. That answer, can you please repeat? Answer will not be kutra. Why it's so? Because kutra is where. It can be in English, but I showed you kutaha also, na? Kutaha from where. So Bharti kutra agachati it was. Means she wanted to ask from where you have come. Right? Bharti kutra agachati. Kutra agachati. Kutaha agachati. From where have you come? One question. Yes. बालकः सर्वदा क्रीडति. And बालका? बालिका? हाँ. बालिका? बालिका कदापि न क्रीडति. बालिका कोलाहलं करोति. कदापि न क्रीडति. केवल कोलाहलं करोति. But it should be a celebration, Vishala. Minu spoke for the first time. Minu spoke. Yesterday also I spoke. You did. Of course, Ramah किं खादति? अच्छा, अस्तु अस्तु अस्तु, उत्तमम् उत्तमम्. परन्तु अहं न स्मरामि, ते कारणेन अहं न जानामि अपि. सो किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थम्. इनफ. ओके, लेट अस गो अहेड. क्रियापदानि. Kriyapadani, just pay your attention. Now you will, especially this will help Kamodini, because I appreciate Kamodini. I tell you one thing, Adani. Whatever may be the thing, even if she doesn't know the word, she will try to do it. Trying is more important than whether it is right or wrong. Trying is more important rather than
right or wrong. I appreciate her. Okay, in whichever way, even she said just now, mixing some Marathi word, we all laughed out. No problem. But she tried at least. हम शर्माते हैं, जो शर्माते हैं ना कि नहीं हम बोलेंगे लोग हंसेंगे, तो क्या हुआ, हंसते हैं तो हंसेंगे, हंसने की बात होगी तो हंसेंगे भाई, है कि नहीं? दैट इज नेचुरल. लेकिन साथ साथ में करेक्ट भी करेंगे, साथ साथ में करेक्ट भी करेंगे. तो आपकी जनरली सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत किधर आती है? वेयर पीपल फेस द प्रॉब्लम. आई नो ही इज अ पुलिंग, आई नो दिस इज दिस, बट देन व्हाट इज क्रिया? I am getting trapped when you are saying about Kriya. Now let us take Kriya. Kriya is verbs. There is a sheet. I'm not going to ask anybody who has the printout or who not. The number 3 column, above the number 3 column is written Vartaman Kal. So now we are going to understand verbs in present tense. The rule is same for all the verbs. But let us start. Purushah gacchati. Purushah gacchati. Gacchati. You are not going. I am not going. Third person is going. Somebody else is going. Kishorah gacchati. Balakah gacchati. Balika गच्छति. लता गच्छति. Gachati. You are not going, I am not going. Somebody else is going. Is it clear? Third person? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड जरा, मैं थोड़ा एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूं. फट करके 1 सेकंड में चाय पी लूंगा. Thank you very much. Did you understand this aspect? What did I say just now? Purushah gacchati. He is going. He is going. Neither you nor me. Somebody else, third person. Ramesh is going. Vinod is going. He is going. You are not Vinod. Neither I am Vinod. Somebody else. So gacchati. Remember what I am emphasizing. Ti. Remember ti. Gacchati. Kon. Ti जाते. Marathi में. Who is going? Ti. Did you all, will you remember this thing when it applies? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I want 100% answer because it's Yes, sir. Because Yes, you sir. do not know which. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Now, ये एक ही व्यक्ति है yes sir, yes sir, yes sir कर रहे हैं. Yes, I got your answer. एक बार बोलेंगे तो भी बहुत है. हाँ, पुरुषः गच्छति. अहम गच्छामि. अहम गच्छामि. पुरुषः गच्छति. अहम गच्छामि. अरे सर ये कॉम्प्लिकेशन नहीं. अहम यानी व्हाट इन इंग्लिश? अहम क्या होता है? I is always connected with me. Me, me. I is always connected with me, me, isn't it? I, me. If it is about myself, I, then gacchami. Huh? Yes. Somebody said something. Hello. अब बीच में बोलेंगे तो दोबारा बोलिएगा भाई साहब. I'm getting upset. Okay. Me, gacchami, me, me, I, me. Very good to remember.
Yeah. So I is always related to me. Me. I means me, myself. Right? So Purushah gacchati, aham gacchami. Now, whenever we say gacchami, there are popular 3 sentences that immediately comes to most of the people's mind. That is, Buddham Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam, yes, thank you very much. Dhammam Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangam Sharanam Gacchami. How many of you all know these 3 lines? Yes, sir. Guruji, second line, please repeat. Dhammam. Dhammam. Not dharmam. Not Dhammam or dharmam, sir? Same hai. Dharmam or dhammam, both are same. Buddham Sharanam Gacchami. Dharmam Sharanam Gacchami. Sangam Sharanam Gacchami. Yes. आपने और कुछ word बताए. I want Dhammam. What is it? Dhammam. Ma adha ma pura. Dhammam. Okay, Guruji. So Buddham Sharanam Gacchami का मतलब होता है I surrender to knowledge. I am going at the feet of knowledge. Means to go and surrender is as good as going to the feet. Yeah. So Buddha means knowledge. It does not mean Mr. Gautam Buddha. Gautam Buddha was Buddha till he got enlightenment. Once he got that wonderful enlightenment, he became Gautam Buddha, knowledgeable Gautam. The Gautam who has immense knowledge. साक्षात्कार हुआ ना उनको, enlightenment हुआ. So that was knowledge. बोधि नगर करके जगह है, बोधि नगर. That is city of knowledge, बोधि नगर. So Buddham Sharanam Gacchami means I am going at the feet of knowledge. Dhammam Sharanam Gacchami means dharma. Dharma means satya, truth. So I surrender myself to the truth. Means I am going to the towards the feet of truth. मैं अपने आप को धर्म यानी सत्य के सामने समर्पित करता हूं. Dhammam Sharanam Gacchami. Third is Sangam Sharanam Gacchami. Sangam Sharanam Gacchami. Sangha yani group of people like what we are today. Our total group. A person has to surrender to the group. He has to surrender. He has to be loyal to the group. He has to be the part of the group. Okay. So again, I repeat the 3 sentences. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangam Sharanam Gacchami. ये पूरे तीनों सेंटेंस में अहम तो किधर दिखता ही नहीं है. Even, why? Because it is Gacchami. I need not write karta. I need not write the subject. Who is the subject of the sentence? Aham. Because the verb itself is defining that I am doing. Gacchami. Gacchatu nahi hai. Gacchami hai. तो gacchami है तो हम लगाओ या मत लगाओ क्या फर्क पड़ता है? Get my point? But philosophically, I is always capital at the start of the sentence, in the middle of the sentence, or at the end of the sentence. I is always capital. Why? Because it has ego. So if you want to surrender to knowledge, you have to remove ego from you. Aham ko nikalna padega. If you want to surrender to truth, you have to remove your ego. If you have to surrender to the group, you have to remove your ego.
You cannot sit and say, I know this, so confuse others. Who mind? I want to show my knowledge. He's not showing his knowledge. He's showing his ego. But the Kriya defined who is going. Without aham, without ego also, it is the Kriya has automatically showing Gachami, Gachami. Only I am going. Nobody else is going. How many of you all realize that Sanskrit is really a philosophical language? We do, Guruji. We all. Sir. Yes. Yes, sir. So life Yes, sir. life में कभी है ना, you will not forget. Thank you. Thank you. Life में आप कभी भी है ना, गच्छामी कभी भूलोगे, है ना? गच्छति भी नहीं भूलेगा। गुरुजी यहाँ पर हाँ, और मी, मी आप लगा रहे हो। गच्छामी में भी तो आई आ गया, नहीं मी है। मी खाली सेंटेंस के स्टार्ट में कैपिटल एम होता है, उसके बाद पूरे पैराग्राफ में ही इज अ स्मॉल मी, मी, एंड ही गेट्स मिक्स्ड अप विद अदर अल्फाबेट्स. Me can get mixed up, but I can never, because I carries ego. Me does not carry ego. Form a sentence with me. Anybody? Anybody can form a sentence in me, English sentence with me. Can I, Guruji? Yeah, please. It is me who decide what to do and what not to do. It is me, but in that case, that me will be capital M. Come along with me. Come along with me. It is me who decides. Yes, it is me who decides. You take the decision is something else. No one else is. Absolutely. Even that is relevant. But there I don't see your ego. Even such a strong word statement, but with me, it does not be severe. Like, come along with me. It's saying, come along with me. Is you are taking somebody along with you. It is you are taking somebody along with you. Or else you will say, learn with me. Just give me a minute. Just give me a minute. I've given a total lecture period. Say ready kar. Are ready, Amma. Chepo Amma. What should I say? The sentence again. I have given you. You wanted a minute. I said I am ready to give you the whole. No. You said just make a sentence with me. That's why I said. No. Yeah, so nice. ये मनोज ढाके कौन है? Who is Manoj Dhake? Sir, it's Monica. I just changed to the mobile. Then it's okay. But please, बीच में अगर मोबाइल चेंज करो तो एक बार आवाज दे देना. हाँ, कोई बात नहीं. So with me, it could either be a request or a command. Come with me. Tell me. Or please tell me. Please tell me. Okay, you are adding please. But me does not give that severity. But I need to know this. Arnab Goswami tha. This is my show. Ego dikh raha tha na. I dikh raha tha na. Okay. It is I who do this. I always dikha. But me will never show you aham. Now in technical terms, now in a language terms, I will take one more point, and that is somebody standing in front of me and I'm just requesting him. मैं उनको खाली निवेदन कर रहा हूँ कि आप जाइए. So what will be? भवान गच्छतु. भवान यानी आप. भवान गच्छतु. या भवती
गच्छतु, बालकः गच्छतु, किशोरः गच्छतु, गच्छति, गच्छामि, गच्छतु, गच्छतु। तू यानी रूड नहीं है। तू ता से हम बात करते हैं संस्कृत में, उसका मतलब ये नहीं होता आप इंसल्ट कर रहे हो। आपके दरवाजे पे अगर भगवान आ जाए और सबके दरवाजे पे देखिएगा, अगले महीने में लक्ष्मी आती है कि नहीं, लक्ष्मी जी आएंगी और आप दरवाजा खोल के लक्ष्मी जी को क्या कहेंगे? अरे आगच्छतु देवी उपविशतु अत्र एव स्थापयतु, स्थापयतु, आगच्छतु, स्थापयतु। ओके, सो तू बोलना इट इज नॉट रूड इन संस्कृत. I'm telling you, it is rather matter of respect also. So I'm making it once more. Gacchati, gacchami, gacchatu. Now, for example, I'm asked. There is a group of people standing, and I'm requesting Ramesh. Ramesh Mahodaya, gacchatu. Ramashah, gacchatu. तो रमेश क्या कहें? रमेश जा रहे. किसी और ने पूछा किम करोति? गच्छामि, आई एम गोइंग, गच्छामि. तो रमेश जा रहे हैं. विनोद और किशोर साइड में खड़े हैं, वो देख रहे हैं, पूछ रहे हैं रमेशः, अरे रमेशः गच्छति, ही इज गोइंग, आई एम गोइंग, प्लीज गो. गेट द थ्री वेरिएशंस. Is anybody confused? Please confess. You can, if you are confused, it is better to confess that I am confused. Sir, please. Yes, again, sir. Please tell. Sir, please tell again, sir. Yes, sir. Please one. Gacchati is for third person. You are not involved. I am not involved. Gacchati. Make some mannerisms. Okay, what I am doing now, have that focus. These are known as learning mannerisms. Learning mannerisms are important. Even when I will be teaching you all some other points, there are variations for male and female, for pulling and striling. There is a programming of fingers. That will definitely help you at an initial stage. Later on, you will say, without the support of this mannerism, you can talk. So what I have said, gacchati. Third So person. when you do this, are you and me involved? No, somebody else is involved, right? Somebody else is involved. Am I right? Who had a question? सर, गच्छा का मतलब क्या होता है? गच्छा यानी जाना. आपके आपने जाना. आप मुझे इसके बारे में मीनिंग पूछ रहे हैं मत, क्योंकि ये ऑलरेडी सबको दे चुका हूं मैं. It has already been passed. If you have not taken the printout, don't ask the meaning of any verb. हाँ, जिसका meaning यहाँ पे नहीं लिखा है, I will definitely tell you. But gacchati is the first verb written here. Gacchati, to go, जाना, to go. लक्ष्मी माँ को हम लोग गच्छतु बोलेंगे तो गच्छतु बोलेंगे तो जाना हुआ कि आना हुआ? जाना ही होता है, आने का बात ही किधर है? देसाई महोदय, आपने प्रिंट आउट लिया है कि नहीं लिया है? हाँ शशांक भाई, तुम्हें प्रिंट आउट लिया था, अभी मेरे पास सामने नहीं है. तो लिया था तो उसके बाद पढ़ा भी नहीं है आपने. मैंने बोला था 1 नंबर का कॉलम, 2 नंबर का कॉलम और 3 नंबर का कॉलम पढ़िए. आज चौथा दिन है. अब तक तो आपको 25 के 25 बाय हार्ट हो जाते थे. हाँ सर. क्या महोदय यार, कोई मुझे बोलेगा कि चलो भाई शॉपिंग मॉल में जाना है, डी मार्ट में जाना है, तो आप जाके खड़े रह जाओगे. आप तो पूछोगे ना जाके क्या करूं? तो शॉपिंग करना है. हाँ, तो आप तो शॉपिंग करने के लिए जाओगे तो ऑब्वियसली कोई चीज खरीदोगे ना. तो ये मैंने कहा प्रिंट आउट निकालो, तो प्रिंट निकाल के देना है.
उसे अध्ययन तो करेंगे ना आप, कम से कम 3 रो तो करेंगे, जो मैंने कहा था कि 1 2 3 खाली पढ़िएगा, डोंट गो अहेड। सर वो एक ही दिन पढ़ा था, दूसरा दिन नहीं पढ़ा। हाँ, तो गच्छति मीन्स टू गो महोदय। ओके। हाँ, आना जाना यहाँ पे नहीं है, इट इज ऑल आर सेम। ओके। कोई थर्ड पर्सन इज गोइंग, इट इज गच्छति। इफ आई एम गोइंग, इट इज गच्छामि। If I am asking somebody to go, it is gacchatu. Where it is agacchatu. Agacchatu. हाँ, agacchatu. So that means it is coming. It is here. It is gacchatu. Be connected with gacchatu. Okay. Huh? When it is gacchatu, why you are asking for coming back? When I am explaining that to go is gacchatu, you are asking me to come back is what? It will come during that time, and it is normally आपको explain करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. By the 10th day, you will start understanding the verbs by yourself. ये आना हुआ, ये जाना हुआ, ये खाना हुआ. और second thing, आगच्छतु या आगच्छति ऑलरेडी हमने अहम के मॉड्यूल में लिया है. अहम गच्छामि और अहम आगच्छामि. वो जो स्लाइड आपको दिखाई थी, करेक्ट सर, वर्णमाला के बाद. करेक्ट सर. देयर आर, प्लीज सर द रूट वर्ड, सर द रूट वर्ड इज गच्छ, राइट? गच्छ इज रूट वर्ड. आर वी गोइंग टू लर्न नाउ धातु एंड ऑल? दिस पीपल दे नो धातु एंड ऑल दैट इज द रीजन ही सेड गच्छ. So please explain that bhavan gachatu part once. Bhavan gachatu. Bhavan gachatu means somebody is standing in front of me. We are face to face, and I am requesting or ordering him to go. Okay. So it is gachatu. Okay. Simple. Gachatu. So whether it is a boy or a girl, whether it for is girl is bhavati. No difference in present tense. I am coming to it. Okay. I am coming to it. तू जा गच्छतु. हाँ, तू जा गच्छतु. तू जा गच्छतु. हाँ सोमन. सर ये जो क्रियापद शीत आपने दिया है, उसमें वर्तमान, ये वर्तमान काल, प्रार्थना, ये सब एक्सप्लेन बाद में हो जाएगा या कर अभी करूंगा, कभी करूंगा. अभी पॉइंट है तो अभी करूंगा ना मैं. वो फिर वर्तमान मीन्स वो काल होगा. वर्तमान काल हो गया. वर्तमान काल और तीसरे लिए हैं. अच्छा. हर चीज में लिखूंगा तो तकलीफ भी हो जाएगी. अच्छा. और दूसरी बात है वर्तमान काल दर्शयति. ये तीनों फैक्टर जो है वो वर्तमान काल दिखाता है. और ये अस्मद और प्रार्थना सेम वही काल भी है. अस्मद वही हुआ ना, वर्तमान काल तीनों. अच्छा. भूतकाल बाद में लिखा हुआ है और उसके बाद भविष्यत काल लिखा हुआ है ना. थोड़ा इंडिकेटिव है. मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि पूरा पर्याप्त है. अगर पूरा पर्याप्त करना होगा तो बुक छपनी पड़ेगी. हाँ, है ना. और बुक छाप के ही अगर पढ़ना है, there are many available. Very beginners, so it cannot be. There are many available also. Yeah. And they are more confusing, I feel. Let us make a easy run, casual run. Correct. हम कहते हैं ना, how is your class? What is the main module of your class? It is a jeans learning. Correct. You wear the casuals. It is the basics. It is a Bermuda learning. We are all relaxed. It is a sea beach picnic learning. Yeah. What should be the feeling inside? Not tension. It is a leisure. What is this time? 2 hours. You will realize on the 11th day when there will be no classes. Vishala was in hospital attending his husband. But during the lecture time, but she had a flexibility. She can join any of the batch that is suitable to her. But every day she used to attend for 2 hours. And I forced her and she says, this is the only time I get relaxed. Other time I am totally in tension. That should be the feeling of learning Samskrita.
But yet there are reasons, you know, we are been entrusted, we have been hammered with classroom learning. When you have to exhibit here this module, you will realize on 11th day, yes, it was a Gurukul learning. We had a feeling of Gurukul, enjoying, of course, playing and understanding, practically understanding. Why to go for the dhatu and mool shabda and dhatu and all those things at this stage of time? No need. That's the reason 99% of India has not learned Samskrita. So-called, there are many who have genius, खाली showcase genius ही, showcase में दिखाते हैं genius ही. पढ़ाने को बोलेंगे तो एक लाइन नहीं बोल पाते. तो अग्रे गच्छामः. हाँ सोमन जी आपने बोल दिया. I will lower your. सर एक क्वेश्चन है, पूछो. आप पूछो, डेफिनेटली. सर वो जो शीट में आपने गच्छतु के ऊपर प्रार्थना लिखा है ना, that is only for request or you can. I call it a request. Why to order when you can request? That's those words are only request words. No, you can. It is other word for order also. Are gachatu. So we can use it there. But we are avoiding negativity. So I say it is a request. Okay. It is आदेश या request. आदेश या प्रार्थना. इसे आदेश या प्रार्थना कहते हैं. Okay. परंतु let us have a request rather than order, as far as possible. And when even then, if the person does not understand, then it should be an order. So let us go ahead. Now in the sheet, when you see gachati is under the category of Vartaman Kal, that is present tense. By itself, the Kriya is gachati. It is considered the first, whenever I ask you, to go ki Kriya kya hai, jane ki Kriya kya hai, you will say gachati. You are right. It is associated with third person and it is the Pratham Kriya. Now when I say Asmad, Asmad is about myself. So it is Gachami. And Pratna ya Adesh means a request or order is Gachatu. These are the three things. You will find all the verbs are in the same format. No change. Gachati, Gachami, Gachatu, Patati, Patami, Patatu, Likhati, Likhami, Likhatu, Nayati, Nayami, Nayatu, Pashyati, Pashyami, Pashyatu, Khadati, Khadami, Khadatu, Prachalayati, Prachalayami, Prachalayatu, Ya Shalayati, Shalayami, Shalayatu, Vadati, Vadami, Vadatu, Shrunoti, Shrunomi, Shrunotu. Same format, no change. There is one more element that is called, it was for C lagate hain, but that we will see at a later stage. You don't need at this moment of time. You want to get more confused, I can introduce. I think so. This is enough for the day. आप लोग को स्ट्रोक मिल गया होगा ऑफ द डे. हाँ सर. यस सर. हाँ क्या यार आज हो गया. हाँ वी हैव स्टार्टेड. अभी मुझे रिवीजन करना पड़ेगा. अभी मुझे शीट प्रिंट आउट नहीं लिया है. सीरियसली जाके प्रिंट आउट लेना पड़ेगा क्योंकि सर कैजुअली पढ़ाते हैं तो कैजुअल होगा. करे तो करे, नहीं करे तो कोई बात नहीं. रामदेव बाबा की बातें याद रखो. हाँ करने से होता है, ऐसे नहीं होता है ना. कोशिश करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, वरना नहीं होगा. You have to put your inputs. Now, पुरुषः गच्छति, महिला अपि गच्छति. गच्छति गच्छति, मैं बोल रहा हूं अहम गच्छामि, या कोई महिला बोले अहम गच्छामि. सेम पुरुषः पुल्लिंग स्त्रीलिंग तदेव.
हाँ, भवान गच्छतु, भवती गच्छतु या भगिनी गच्छतु, तू सेम। सो वर्तमान काल ये प्रेजेंट टेंस दिखाता है। नाउ लिसन प्रॉपरली। वर्तमान काले क्रियापदानि मध्ये लिंग भेद नास्ति। लिंग भेद अस्ति वा? लिंग भेद अस्ति वा? नास्ति 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 नास्ति। लिंग भेद नास्ति। लिंग भेद नास्ति। पुल्लिंग गच्छति, स्त्रीलिंग अपि गच्छति। तत्र अहम गच्छामि, अत्र एव अहम गच्छामि। भवान गच्छतु, भवती गच्छतु। कोपि भेदम नास्ति। There is no difference. Am I clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Sincerely, I am asking you all with real feelings, okay? With genuine feelings. Are you all feeling heavy? Because I have to start with new topic. No, sir. Continue. Excuse me, sir. Can I say? Yeah, please. Go ahead, Mr. Nayak. Yeah, sir. I have some urgent work. Can I leave now? Please. But refer to your refer the recording whenever you have time. Yes, definitely, sir. Before tomorrow, refer this part at least. Whatever you have listened is okay. After that, you pay extra attention. You have any doubts, you can ask me tomorrow. Sure, sir. Thank you. Everybody I am telling, if they have any urgent work or anything, if they sincerely go along with the recording, your doubts, note it down, ask me tomorrow. Yeah, sure. Thank you, sir. Welcome. गुरुजी थोड़ा सा कहना है एक चीज। बोलिए ना ओम जी। गुरुजी कल आई एम इन राइटर टीम इन गीता परिवार, तो मैं तो लेट आऊंगा या गुरुजी नहीं आ पाऊंगा प्लीज। हाँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। रिकॉर्डिंग का लिंक आएगा जब भी समय मिले आपको, तो प्लीज कृपया करके बाय ऑल मीन्स गुरुजी, बाय ऑल मीन्स। आपको तो जरूरत, आप तुरंत पकड़ लोगे क्योंकि यू हैव ऑलरेडी अंडरगॉन quite a good sessions, so you will pick up. This is the thing, you know, even after doing abhyas work, abhyas pustakam, it is good to repeat the session. Jyoti, does it make difference to you after doing this? Yes, sir, I love it more. The abhyas work, after abhyas work and before experience. So now I'm learning small nuances which I had missed in the earlier ones. Now in my opinion, sorry. ओम जी कुछ बोल रहे थे। In my opinion, Guruji, one should attend this course as long as you continue to teach, Guruji. धन्यवाद। It can be. I am there forever. Don't worry. And as I said, I am going to live for another 200 years. Jimmy is laughing. Come on, Jimmy. I am not that old. Okay. So I am going to live for 200 years. And I may change my clothes, you know. I may change my clothes. Because 200 साल तक कोई भी कपड़े मैले होते हैं. I may change my clothes. But yes, I will be there again. And I will be happy because you all will be also teaching. I have confidence. Pay attention. Thank you, sir. Thank you so much. Just pay attention. हाँ जी, हाँ जी. Aham laugh nasti. Aham. Laugh. What to say? Laugh. I don't know. Laugh. Hasya. 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 Hasya nasti, sir. Nasti नहीं. Aham na hasami. અહમ ન હસા. ઓકે. પછી હસતા હસતા કહે છે કે હું હસતી નથી. હસતા હસતા બોલે છે. અહમ હસામી. સદૈવ હસતુ. હા? સદૈવ હસતુ. સર અહમ સ્માઇલામી. સ્માઇલામી. अस्तु अस्तु। तो अति उत्तमम्। अग्रे गमिष्यामः। Now very important point.
This is a Vibhakti module. To explain this Vibhakti, let me come up with the sentence. The sentence is Dashratah Putrah Ramah. अबे as we know our history, हमें हमारा इतिहास पता है, तो one person translate this into a sensible sentence in English और एक व्यक्ति हिंदी में इसे ट्रांसलेट करे. दशरथ son is Ram. दशरथ son apostrophe s और ये ना apostrophe s ना. Yes, apostrophe s. Dashrath son is Ram. But that is missing here. हिंदी में क्या होगा? Son's name is दशरथ का पुत्र राम. Ka is missing over here. Dashrath ka putra Ram. Ka is missing. So when you put apostrophe s in English और जब भी आप हिंदी में का या की लगाते हो, आप रिलेशन दिखाते हो, संबंध दिखाते हो. दशरथ का संबंध राम से दिखा रहे हो. कैसे? पुत्र के द्वारा. पुत्र जो है वो रिलेशनशिप का नाम है, परंतु इनका और इनका रिश्ता दिखा रहे हो ना. राम दशरथ का पुत्र है. हाँ, दशरथ का पुत्र है, तो का किधर है? का मिसिंग है. का मिसिंग है ना. दशरथ का पुत्र है, तो का किधर है? का है ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे शब्द प्रथमा विभक्ति में है इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. तो अभी हमें कोई तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना इसको दिखाने के लिए कि दशरथ का पुत्र राम. तो ये जो है विसर्ग निकाल देना है और स्य लगाना है. दशरथस्य पुत्रः रामः. दशरथस्य पुत्रः रामः यानी दशरथ का पुत्र राम. दशरथ का रेड में जो है वो का पुत्र रामः. संबंध दर्शयति, रिलेशनशिप दर्शयति. अर्जुन का चश्मा, अर्जुनस्य उपनेत्रम. अर्जुनस्य उपनेत्रम. समझ में आ रहा है ना? क्योंकि किसका उपनेत्रम? उपनेत्रम ठीक है, उपनेत्रम किसका उपनेत्रम? अर्जुनस्य उपनेत्रम. स्यूतः बैग. स्यूतः कस्य स्यूतः? अरे गोपालस्य स्यूतः या फिर तस्य स्यूतः या तस्याः स्यूतः. तस्य स्यूतः या तस्याः स्यूतः. रिलेशन दिखा रहे हैं ना आप. किसका, उसका रिलेशन हुआ ना. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मैं रिपीट करते जा रहा हूं बिकॉज देयर इज नो रिस्पॉन्स. Yes. प्लीज नॉट समझ सर. तो आप लोग समझ तो रहे हो लेकिन रियलाइज नहीं कर रहे हो कि मैं गोल गोल घूम रहा हूं. मेरा तेल निकल गया उल्लू की तरह गोल गोल घूम के. सॉरी सर. कोई रिस्पॉन्स होता है तो मुझे पता चले कि हाँ नहीं डाउट है या क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ू. हाँ प्लीज. हाँ सर बोलिए. अच्छा समझ में आ रहा था इसके लिए और मैं समझ रहा हूँ. समझ में आ रहा. दशरथस्य पुत्रः रामः संबंध दर्शयति. इसको कहते हैं षष्ठी विभक्ति. 6 नंबर की विभक्ति षष्ठी विभक्ति. षष्ठी विभक्ति. ओके, वन मोर सेंटेंस. शिवः पुत्रः गणेशः. कोई करके देगा क्या होगा? शिवस्य पुत्र गणेश. अभी उल्टा कीजिए. गणेश. गणेशस्य पिता शिव. गणेशस्य पिता शिव. हाँ, पिता शिव. हाँ, एक 2 बैच में ऐसा हुआ, दोनों बैच में ऐसा बोले गणेशस्य पुत्र शिव. देखिए उसका पिता शिव. पिता शिव. उत्तम. जनकः पुत्री सीता. जनकः पुत्री सीता. जनकस्य पुत्री सीता. उत्तमम. यानी आपने मार्क किया.
जनक। हाँ सॉरी, पितास्यः पुत्र पिता जनकः। मैंने अभी तक स्त्रीलिंग लिया नहीं है ना। हेलो, कौन थे? वो पहले का सेंटेंस था ना, वही उल्टा किया। पहले के सेंटेंस में ये किधर था? स्त्रीलिंग किधर था? शशांक भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है? सॉरी सर, गलती हो गया। नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या है आपको? आप क्यों 2 कदम आगे चल रहे हो? बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं, 2 कदम आगे जा रहे हो। वाई सो? यहाँ पे बताइए मुझे, पहला जो आप बता रहे हैं उसके पहले वाला इधर बताइए, कौन सा स्त्रीलिंग नाम है? किधर भी आपने सिया लगाया है वो दशरथ स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? महोदय जवाब दीजिएगा। पुल्लिंग है सर। आप जवाब देते रहिएगा। यहाँ पे सिया लगाया है, शिव पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। गणेशस्य ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। तो जनक की बात आई तो आप सीता करने की कोशिश की कि सीता सिया किधर लगाया मैंने? आप बोल रहे हो पहले है था, कहाँ था? सॉरी सर। गच्छति के बारे में आपको मालूम नहीं, अगच्छति। आगच्छति का हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। क्यों कर रहे हैं महोदय? आप आगे क्यों भाग रहे हो? जनकः पुत्री सीता, यानी ये जो है स्य, मैं वही बोलने वाला था, स्य पुल्लिंग शब्द में लग रहा है, पुल्लिंग। तो क्या होगा? जनकस्य पुत्री सीता। फाइन। नाउ कर्णः सूर्यः पुत्रः, ऑर्डर चेंज मत कीजिएगा, ऑर्डर चेंज नहीं करना है, आगे पीछे नहीं करना है। तो कैसे वाक्य बनेगा बताएंगे कोई? पुराने स्टूडेंट इंदिरा मासी तमें भी शांत रहो। सर, कर्ण सूर्यस्य पुत्रः। उत्तम। कौन थे? कौन थे? पार्श्वती। सॉरी, पार्श्वती। पार्श्वती। पार्श्वती उत्तम। ताला बाउंडे, ताला बाउंडे। Absolutely perfect. कर्णः सूर्यस्य पुत्रः। अभी पूजा करते ना, राइट जगह पे राइट विभक्ति। कौन पूरा ऐसा? राइट जगह पे राइट विभक्ति डालते हो तो शब्द आगे पीछे जाएगा, वर्ड्स आगे पीछे जाएंगे तो भी देयर इज नो डिफरेंस। पुत्रः कर्णः सूर्यस्य, मीनिंग चेंज हुआ? क्या लग रहा है आपको? नहीं हुआ, नहीं हुआ। पुत्रः कर्णः सूर्यस्य, चेंज नहीं हुआ। सूर्यस्य कर्णः पुत्रः, मीनिंग चेंज हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं। तो सूर्यस्य पुत्रः कर्णः तो भी नहीं हुआ, बिकॉज राइट वर्ड के साथ राइट विभक्ति आपने ऐड कर दी। सो इफ यू चेंज द अल्फाबेट आगे पीछे, टोटल वर्ड्स आगे पीछे, नॉट अल्फाबेट्स, वर्ड्स को आगे पीछे, इट विल नॉट चेंज द मीनिंग, बट प्रोवाइडेड it should be at a right place. वित्त कोशः नाम किम? वित्त कोशः का मतलब है बैंक, बैंक। नाम किम? वित्त कोशः। वित्त कोशस्य नाम किम? हाँ, पुल्लिंग शब्द अस्ति। हाँ,
तो वित्तकोशस्य नाम किम? वित्तकोशस्य नाम किम? विसर्ग निकाल के सिया लगाना है। विसर्ग जो है उसे निकाल दीजिएगा, सिया लगाइए। ठीक है। नाउ पूर्णचंद्र सौंदर्यम महत्। पूर्णचंद्र मीन्स फुल मून, पूनम का चांद। सौंदर्यम मीन्स ब्यूटी, महत् मीन्स ग्रेट। तो किसकी ब्यूटी ग्रेट? Whose beauty? पूर्णचंद्रस्य सूर्यचंद्रस्य पूर्णचंद्र, पूर्णचंद्र पूर्णचंद्रस्य सौंदर्यम महत्। महत् मीन्स ग्रेट। एषः महत् कार्यं करोति, महत् कार्यं करोति। महत् योगदानं कृतवान्, श्रम योगदानं कृतवान्, महत् श्रम योगदानं कृतवान्। कहते हैं ना महत्, ग्रेट। अग्रे आंध्र प्रदेश, ये पुराना है, नॉट विथ न्यू डिवीजन ऑफ द स्टेट। आंध्र प्रदेश राजधानी भाग्यनगरम। भाग्यनगरम, आई हैव नॉट रिमूव दिस बिकॉज ऑफ भाग्यनगरम। भाग्यनगरम यानी हैदराबाद। हैदराबाद का पुराना नाम था भाग्यनगरम। सो आंध्र प्रदेशस्य राजधानी भाग्यनगरम। आगे पीछे भी करेंगे बट विथ प्रॉपर सियर, इट विल नॉट चेंज द मीनिंग। राजधानी आंध्र प्रदेशस्य भाग्यनगरम, भाग्यनगरम राजधानी आंध्र प्रदेशस्य। आगे पीछे करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं है, बिकॉज एट द राइट वर्ड आपने राइट विभक्ति डाल दी। गलत जगह पे डालते तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता। अग्रे एषः एषः कस्य पुत्रः? एषः कस्य पुत्रः, किसका बेटा है? एषः कस्यस्य पुत्रः। कस्यस्य पुत्रः ना मैडम, ऑलरेडी ये षष्ठी विभक्ति में ही है। इट इज ऑलरेडी कस्य पुत्र। ना ना ना, ये क्वेश्चन है। एषः अर्जुनस्य पुत्रः, ये जो कस्य है दैट इज आल्सो इन षष्ठी विभक्ति। कह का कस्य बना, कह। got it. विसर्ग निकाल के सिया लगाया, कह, सह कह, एषः कह, एषः कस्य पुत्रः, किसका पुत्र है? अर्जुनस्य, या एषः मम पुत्रः। तो मम पुत्रः, तो अहम की षष्ठी विभक्ति इज मम। मम नाम अर्जुनः, भवतः नाम किम? मेरा अर्जुन अर्जुन है। या कोई मुझे पूछेगा, कोई हाथ में दिखाएगा एतत् उपनेत्र कस्य, तो मैं बोला मम उपनेत्रम ददातु। एतत् उपनेत्रम कस्य, किसका है ये चश्मा? मैं बोलूंगा मम उपनेत्रम, यानी षष्ठी विभक्ति अहम का। मैं ये नहीं बोलूंगा अहम उपनेत्रम, नहीं, रॉन्ग, विभक्ति गलत। तो मम उपनेत्रम, मम इज अहम की षष्ठी विभक्ति। एम आई क्लियर? अग्रे यस, जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड प्लीज, सॉरी, देयर इज लॉट ऑफ इंटर
I'm sorry. Just I had to attend because my friend was sitting for quite a long time. He's a doctor and he just left just now. He wanted to check my pressure. So quite a good improvement, Dr. Anita. It is 160. No? Yeah, 160. 160 by 90. Okay. It is haywire. Again, yes. That's not good actually. Actually not good. Still higher. Sorry? Still higher, 160. Yeah. It's quite high. But okay, fine. It is better than yesterday. Acha. Margaha ante. Ante means at the end. Margaha ante mama gruham. Where will be the change? Margasya. Margasya ante mama gruham. Now in this sentence, there are two Sashti Vibhakti. Which are those? Margasya and another one? Ante. Aham has become mama already. Yes. So Margasya and mama, both are Sashti Vibhakti. So it is possible. In one sentence, there can be a repetition of the same. Sir, I have a question. Yeah. Why it's called Shashti Vibhakti? Why it is called? Why means what? It has been characterized that way. Nothing more. No, I mean characterized by any sixth, something like that, or I mean, why it's Shashti? Why not seventh? Yeah. Because seventh is already occupied by somebody else. Who was that? Sorry, who was that? Parswati. Why you are Parswati? No, I mean. Why are you not? Is it? Why are you not Jasmine? I'm not Kamodini because I'm not. Why are you not? I'm not that much knowledgeable like Kamodini. Why are you? And then why are you not Anita? Why are you not Meenu? Sashti is Sashti. There are principles that are laid down. So every grammar, the total grammar were divided into 7 sections initially. So basic grammar. Basic grammar was divided, which helps you for a sentence formation. This basic grammar will help you for basic sentence formation. So they have some principles. On that principle, they have the first step was to bifurcate different things so that a dialogue can be developed. Okay. So if such things are not available, how can a dialogue be developed? How can say that this is mine, it is his, and he's where? If I have to show him. So like with which language are you comparing? That's the great thing, because in Andhra also there is a Vibhakti. No, I'm not comparing. Actually, first I was thinking that Shashti, sixth means in the sixth word I have to change that thing. No. Not at all. Not at all. Okay, sir. No. Don't be. Sixth word, we have not taken any word more than 4 words. Any sentence more than 4 words. Till now, we have not gone more than 4 words. Even in my Pratna, Shibir Gitam, not more than 3 words. Sanskrutasya prasaraya, which Vibhakti? Which Vibhakti? Shashti Vibhakti. Naijam sarvam dadamya sanskrutasya prasaraya. Sanskrutasya krute jivan, sanskrutasya krute yajan. What was that? Yeah, Shashti Vibhakti. There were no 6th alphabet or 6th word or anything of that sort. Okay. There was no fixed pattern, number 1. Number 2 was, it was showing the relationship. For whom I want to give my life. To whom I want to samarpayami. My life I want to samarpay. Samskrutasya. It is the pratna, that is, I am speaking for whom? For Samskrutam. So, Sashti is Sashti.
Now, tomorrow don't come out, start and say why rose is rose. Please. Because because A.R. Rahman came up with Rosa, so it is rose. Don't do that. And if you say so, I would give Shakespeare's dialogue only. What's in the name? You don't like Sasti? Name it something. Give a particular name, but as far as you can understand the concept is more important. Okay. So to make it easy, there are some things like Prathama Vibhakti, Dvitiya Vibhakti, Tritiya Vibhakti, Chaturthi, Panchami, Sasti, Saptami. और एक संबोधन आता है. Sambodhan comes in the chart of Vibhakti, but it is actually not a Vibhakti. But it is included in the chart of Vibhakti. Now, ये सारी चीजें अगर आप देखो, तो what does it make? It is just a tabulation. It was good that you didn't tell me why these columns are numbered 1, 2, 3, 4. Why these rows are numbered 1, 2, 3, 4. Same thing, na? To make you understand. Column number 1, row number 3. Yeah, got it, sir. Okay. Sir, masala dabba. Masala dabba. Yes, exactly, masala dabba. I think so she has missed that. She has missed the masala dabba. You have not attended, na? Third lecture, masala dabba. That's the reason. Ultimately, no problem. Vrukshaha adaha chaya bhavati. वृक्षस्य अधस्य छाया भवति. Why adhasya? Well, all visarga you want to remove? अच्छा, only one. Which is relevant? Now which is relevant? What is relevant? You decide. વૃક્ષની અધૂરી છાયા છે એમ છે ને? એટલે છાયા બેન છે. ભવતી. અચ્છા, ભવતી છે, બરાબર છે. હા, બરાબર છે. એટલે ખાલી વૃક્ષસ્ય અધ છાયા ભવતી આવશે. આજે કમુદીની તારું આવી બન્યું. ના, ભવતી આ કઈ ભવતી હતી? આ તો હોય એવી રીતે છે. ભવતી એટલે હોય છે છાયા. છાયા હોય. ભવતી. Not madam. ભવતી નથી, ભવતી છે. रस्व ने दीर्घ. रस्व ने दीर्घ. याद आया आपको? याद आया? ना હું શીટ ગોતું છું હમણાં. ગોતું છું એટલે વાંચું છું એમાં. હવે સાંભળો. તમે જ મને પૂછ્યું હતું. You only had asked me કે રસ્વ દીર્ઘ does it make difference? Yes. Now you got it. It changes the meaning. Change the meaning. Yes. होना छे એટલે છે, बराबर છે. देखो कुदरत का भी खेल. जिसने सवाल पूछा वही जवाब के लिए आगे आ गया. गुरुजी लास्ट शिविर में मारो वारो હતો आज सेंटेंस ऊपर. કોણ છે? રીટા. રીટા તારો વારો હતો. આઈ નો. છાયા ભવતી. તારા પછી મારો, તારા પછી મારો, વારા પછી વારો. વારા પછી વારો. રાઈટ. अग्रे. वृक्षः अधः छाया भवति. Yes, fast. वृक्षस्य अधः छाया भवति. Yes, वृक्षस्य अधः छाया भवति. है कि नहीं? अगर छाया नाम की लड़की होती तो क्या होता? सेंटेंस. टी चेंज हो जाता पीछे. दीर्घ ई चेंज हो जाता. तो वृक्षस्य अध छाया भवति यानी छाया मैडम क्या? छाया मैडम. वृक्ष अधः पेड़ के नीचे छाया मैडम और है. छाया मैडम है. तो है के लिए क्या वर्ड था? चार्ट मत देखिए. वृक्षस्य अधः छाया अस्ति. छाया अस्ति. तो मैं ढूंढता कौन सी छाया है कि नहीं? करेक्ट. परंतु भवती यानी होना. तो छाया होना यानी शैडो.
It is a shade, shadow. That is how you have to differentiate the two. Correct. We end our lecture today on this. It is pooling that has been completed. I stopped my this thing and let me continue so that there are others who are going to hear. Tomorrow, again, a short 2-slide briefing about the pooling, and thereafter Striling, Napunsakling, and ahead. Okay? Are we done? Okay. Dhanyavadah. Dhanyavadah. Shubham bhavatu. Shubhratri. नमो नमः नमो नमः गुरुजी धन्यवाद धन्यवाद नमो नमः गुरुजी धन्यवाद 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 पुनर्मिलामः धन्यवाद निश्चयेन हरि ओम हरिओम 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 तुम्ही आता काहीतरी म्हणालात की प्रगत वर्ग आहे 12 दिवसाचा 10 दिवसाचा. हा, ते आपली पुस्तक आहे. मी उद्या त्या संक्षिप्त मध्ये मी तुम्हाला सांगेन. ती पुस्तक आहे ती वर्कबुक सारखी आहे. आपण शाळेत असते ना वर्कबुक, ते प्रत्येक पॉइंट तुम्हाला समजावून तुम्हाला समोर लिहायचंय. बरं. पण समजून आपल्याला समजायचा तो पॉइंट आणि स्वतः लिहायचंय. म्हणजे त्याच्यानी जास्त करून इम्प्रुव्हमेंट कुठे येतं, जेव्हा स्वयं लिहिताना तुम्ही झटकन लक्षात राहतं. बघा ते पुस्तक नाही, ते पुस्तक आता अवेलेबल होणार नाही. मी PDF फाईल पाठवणार. प्लीज यार पाठवून तर बरं होईल सर, आम्हाला आम्ही प्रिंट करून घेऊ सर. हा, त्याला ऑलवेज आपलं मॉड्यूलच असं आहे. जेव्हा डिक्लेअर करू तुम्हाला ऍप मध्ये जाऊन ते परचेस करायचं आहे. कोर्स तिथेच पेमेंट करायचं आहे 500 रुपीजचं. जसं तुम्ही पेमेंट वगैरे कराल तसं आपल्यासारखं ग्रुप बनेल. त्या ग्रुप मध्ये पुढे म्हणजे कोर्सेस करता फीस आहे. हा, सॉरी, पुढे जे कोर्स करायचे आपल्याला, हा, त्याचं नाममात्र शुल्क आहे ना? नाममात्र शुल्क आहे. ज्यांना जमत नसेल त्यांनी माझा संपर्क करावा. असा काही शुल्क देणं कंपल्सरी नाहीये. जे नाही देऊ शकत त्याला काही हरकत नाहीये, त्यांनाही आम्ही अकोमोडेट करतो. बरं. ठीक आहे, मग आपल्याला कॉन्टॅक्ट करतो आम्ही नंतर. मग नक्कीच. स्वराली बेटा, स्वराली कहाँ थे आप इतने दिन? सर एक्चुअली मेरे पेपर्स चालू थे. पेपर्स थे बेटा? ओके बेटा. धन्यवाद महोदय. धन्यवाद सर. धन्यवाद. नमो नमः सर. नमो नमः. मीनू नमो नमः. नमो नमः सर. नमो नमः. मासी नमो नमः. रीडा नमो नमः. शुभरात्रि. नमो नमः. नमो नमः. नमो नमः. मैं यहाँ पे सेशन एंड कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे सेशन की तैयारी करनी है. स्वाति जी नमो नमः. स्वराली नमो नमः. नमो नमः. नमो नमः सर. नमो नमः. धन्यवाद. नागोराव जी नमो नमः. MBBS शर्मा जी नमो नमः. मासी नमो नमः. राजूली नमो नमः. गुरुजी. नमो नमः.